Assalamu alaikum everyone. So today we are going towards Pann Cave. Basically, Pennsylvania में एक spot है जहाँ पे ये caves हैं. It's in the center of the Pennsylvania. Around 3-hour drive all over from DC to that place. It's really famous. You can just Google it and you will find this place. Now we are at the reception of the Pann Cave. So first of all, we have to go and buy the ticket. Tickets are like around $50 per person for the safari ride, and yep. So now we are inside. These are the all gems. ये stones up उस cave से निकले जो हम आगे भी देखेंगे. And yeah, we just got our tickets. Now we are heading towards our ride. So up ये हमारी ride आ रही है. So basically इस तरह की buses for safari ride and wildlife tours. So ये हमें लेके जाएगी different enclosures के ऊपर, और फिर let's see, like हमें नहीं पता भी हम आगे क्या देखेंगे. So first of all, we are here. These are wolf. They are 4. So ये 3 को बुलाया है अभी. So voice is she's like explaining everything in the English, so I'm just translating. So ये wolf newborn है, white वाला newborn है, like just 9 month, और इनको ये feed करते हैं, और they are really wild, so that's why they are in the cage. And I like wolf, so yep, let's go for the next one. The difference between horns and antlers: horns stay, antlers drop, and regrow back. Alrighty. So you can see those itty bitty little calves laying there, not so itty bitty anymore. But once they're a few weeks old, they start showing their horns, and then they grow straight outwards. Once they reach about 3 to 5 years old, the growth rate of the horns starts slowing down, and then they slowly start taking shape. You can see many of the shapes that they could become eventually. Now the males get up about 1,600 pounds, females get up about... Oh. She's so pretty. He is so pretty. Happy, can he come over? By you? So the dark colored one here, this one's Sly, and the orange one is Swiper. Zorro, I see you. Come on, Zorro. Oh, there she comes. There's another orange one off to your right, that's Zorro. And if you see another dark one like this, that's Houdini. The difference between a red fox and a gray fox is the tips of their tail. A red fox has a white tip tail, and a gray fox has a black tip tail. You're probably really confused at the dark colored one here. This is known as a silver fox. This is just a more melanistic form of the red fox. The only thing I got is some whoppers in here, and I definitely cannot give them. That's a treat for myself later after this one. They're like, but I know you're the future. I know, I can't look at them. I gotta look at you guys because I'm like... Alright, any other questions? Giddy up, giddy up. One this time, Zorro. So अब हम जा रहे हैं big cats की तरफ. यहाँ leopards हैं, and then there is a cat also. So first of all, we are heading towards to the leopards, and our tour guide will give us a short information about these leopards. So now this is the cage. So हमें यहाँ खड़ा होना होगा, और yeah, let's see. Alright, the one on top of the rocks. It's so hard when they're moving to tell who is who. Any other questions about a mountain lions? Why such a small enclosure? The enclosure at the time was built to the specifications that it was supposed to be.
Also, hey buddy, don't do that, please. Also, it is a little bit of a struggle. Goodness. These are called mountain lions. Come by. Okay, and then wave to him, or let them. I don't know. Thank you. You were very nice. Okay, so, now, there used to be about 50 to 60 million of these guys roaming around North America, but due to westward expansion, the railroad system. So now we are heading towards our cave. We just finished our park tour. अच्छा था कुछ चीज़ें थी. It's a cave inside. यहाँ पे जेम्स भी मिल रहे हैं जो यूनिक पत्थर होते हैं. So yeah, we are heading toward. This is one here, but I think we have a boat ride too. This is a cave. Handlings. Chalo. This kid is really enjoying the. Oh wow, what a cave! Inside this, let's enjoy. Some tour guides when they get tripped on, they say, that's a cave kiss and it's good luck. And that might sound kind of cute when you're down here, but it doesn't sound so cute when the water falls off on top of your head. That would cause just a little tiny bit of sediment. And that's how the formations grow. They grow very slowly. They can grow about the thickness of a sheet of paper per year. So on average, it takes 300 to 500 years for them just to grow an inch. Yes. Well, those rocks that are pointy, it looks like they're actually falling down. They're growing, but they're not falling down. And food that iron rust or oxidizes to give the cake these red and brown colors. The greatest limestone, and if you see green, that's moss that grows around the artificial light. And that's what the lights on. If you're wondering why the lights just went off, it's because another boat just came into this area. The boat coming back into तो जैसे हम अंदर जा रहे हैं पानी का टेम्परेचर 50 से 52 फ़ारेनहाइट हो गया है. एंड इस टाइम गर्मी है तो हमें अंदर जाके थोड़ी सर्दी लग रही है. जैसे ही हम एंटर हुए हमें ये फॉर्मेशन नज़र आई रॉक्स की. नेचुरली ये शेप्स लॉइन एंड एलिफेंट में चेंज हो गई हैं विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग. मैंने ये सोचा ही नहीं था इस तरह भी पॉसिबल है. एंड वो टूर गाइड सारा एक्सप्लेन कर रहा है इस तरीके से ये तकरीबन 1885 में बिल्ड हुआ था. इट वॉज़ वेरी ओल्ड एंड इतना छोटा सा था और ये खुद ही स्ट्रेच हुआ है टाइम टू टाइम. एंड बहुत अंदर गैप्स में थोड़ा बड़ा है एंड देन बहुत छोटा छोटा सा बना हुआ है जिसमें ओनली वन शिप जा सकती है. जैसे वो शिप हम उस शिप का वेट कर रहे हैं. जैसे ही वो शिप वो निकलेगी उधर से आएगी तो हम अब उस तरफ जाएंगे बिकॉज़ वो आगे की रोड बहुत छोटी है एंड ओनली वन शिप कैन गो. एंड मुझे तो सर्दी लग रही है. इस तरीके से सेटअप करा हुआ है स्पेशली फॉर किड्स.
इवन मुझे भी बहुत फैसिनेट कर रहा है ये, रेड से रेड हो रहा है, ग्रीन से ग्रीन में टर्न हो रहा है, एंड आई गेस ही इज़ चेंजिंग नाउ इन ब्लू, एंड वाज रियली अमेजिंग। ब्लू से पूरा केव ब्लू में हो रहा है चेंज, एंड बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। आई कांट एक्सप्लेन माई वर्ड्स। आप देख सकते हो कि आगे रॉक आ रहा है, वो है नेम एज अ स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इट्स नॉट लुक लाइक एग्जैक्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी, बट बहुत सिमिलर आप कह सकते हो कि रॉक के फॉर्मेशन से इतना लुक आ रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी का। एंड हम लोग अब बाहर की तरफ जा रहे हैं, बहुत टाइनी स्पेस है, एंड हम लोग साइड से आई डोंट नो बोल रहा है कि सारे नीचे का लोग हैं, एंड घबराने की बात नहीं है, इट इज़ फन, एंड लाइफ एक ही बार मिलती है, सो लेट्स एंजॉय। Wanna move my feet, wanna drink my wine. 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 Wanna move my feet. सो गाइस, अभी हमने लेक टूर लिया। बेसिकली ये बोट हमें लेके गई दूसरी साइड ऑफ द केव, और अभी टूर गाइड हमें ये बता रहा है कि जब सनसेट हो रहा होता है और जब सन की लास्ट रेज़ पानी के ऊपर पड़ती हैं, तो जिस तरह भी पानी ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, इसी तरह ये क्रिस्टल ग्रीन हो जाता है, और इट्स लुक सो ब्यूटीफुल एट द टाइम ऑफ सनसेट, और जब वेदर भी क्लियर होता है। सो अब हम दोबारा से इस केव के अंदर जा रहे हैं। सो मुझे पता है कुछ लोग शायद बोलेंगे कि दिस केव इज़ लाइक इज़ सिक्योर और नॉट। यहाँ पे जैसे अमेरिका में बहुत फेमस है, रेप्टाइल्स पानी के अंदर होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। सो इस तरह का कुछ भी नहीं है।
मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जहाँ पे इस तरह के सिक्योर टूर्स होते हैं तो वो लोग मेक श्योर करते हैं, वहाँ पे रेंजर होती है और वो लोग मेक श्योर करते हैं कि इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो. सो यू कैन गो विथ योर किड्स बिकॉज इन आवर बोट वी हैव लाइक kids also. And yeah, so now we are heading back to in the cave. And yeah, so next side हम जाएंगे और cave का tour खत्म. It's fun to see the cave from a different perspective and to maybe document some of the places we can't see from the boat. At the end of the day, I'm just trying to figure out how many tour guides will take to change a light bulb. It's not a good back here. So basically this is how people find out the gold, yeah, stones or gems. So let me show you how it works. आप इसको लेते हो और अभी तक पत्थर खराब है. बेसिकली द कॉन्सेप्ट ये आ रहा है केव से पानी, केव जहाँ से भी हम आए उस ड्रम में आता है पानी, उस ड्रम से आप यहाँ आता है और फिर माइनस क्या करते हैं, इस तरह से इसको रखते हैं ताकि गोल्ड वाले भी जो गोल्ड ढूंढते हैं. सो वी हैव टू कीप लाइक दिस, वन विल कीप लाइक दिस टू मेक श्योर कि हम कुछ ना कुछ ढूंढ लें. Let's hope for the best. Finger tight. It's time. बहुत पेशेंस का वो है, मुहायरा करना होता है. But nothing here. Some are here. So ये different type के stones हैं जो उसमें निकलते हैं. We are already late. But मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ. Opal ये सारे इस माइन से निकलते हैं. ये stones हैं वो इस माइन से निकल रहे हैं, अंदर मिल भी रहे हैं. It's really expensive. So we have to go now somewhere else to see some beautiful things. This is a beauty.